Namaskar. Welcome to all respected dignitaries. I would like to welcome today's speaker, Dr. Mr. Rajagopal J K, Managing Director of JRKs Siddha, Dr. Sarveshwar Kar, Dr. Vishnu Sharma ji, Dr. VK Agnihotri ji, respected Dr. Chandra Bhushan Jha ji from BHU. Welcome, Gurudev. Welcome. Welcome for your blessings today. Welcome, sir. So, today's session, really, I am grateful to all speakers that I can't provide time, and then also showering, being showered by the blessing of all dignitaries speakers. People will join simultaneously. For inauguration of today's session, I would like to request Dr. Chandra Bhushan Jha ji, Emeritus Professor, former head of the department, former dean, Ayurved faculty, respected Dr. Chandra Bhushan Jha ji. नमस्कार. प्रणाम सर, प्रणाम सर. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. स्वागतम गुरुदेव. मेरी ओर से सब लोगों को खूब खूब अभिवादन. और बड़ा ही समसामयिक विषय आपका है आज का, और हम भी कहे कि इस पर थोड़ा सा और अपने विचारों को पुष्ट करें, सुने क्या क्या नई बातें इसमें सुनने को मिलती हैं. बाकी ये जो ओमिक्रॉन का दौर चला हुआ है, इसने अपना बहुत लंबा चौड़ा काम कर डाला है. बहुत कम लोगों को बाकी छोड़ा है इसमें, लेकिन जो लोग बाकी बचे हुए हैं वो सुरक्षित किस तरह से बचे रहें, इस हेतु जितने भी प्रिकॉशंस हैं या जो कुछ भी इससे संबंधित बातें हैं, ये सभी आज के उसमें डेलिब्रेशन में सुनने को मिलेगा. तो मैं अपनी ओर से आपको खास करके इस भागीरथी प्रयास में जो आप लगे हुए हैं, तो खूब खूब हृदय से आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं और साधुवाद भी कहें. तो चलें आगे बढ़ें इसमें. जी सर, जी सर, विद योर काइंड परमिशन सर. आज के हमारे पहले वक्ता है, आई वुड लाइक टू वेलकम राजगोपाल जे के, मैनेजिंग डायरेक्टर, Dr. JRK Research and Pharmaceutical Private Limited, Chennai. Dr. JRK Research and Pharmaceutical Private Limited is a 29-year-old research-based company engaged in research, development, manufacture, and marketing of herbal formulation based on Siddha system of medicine. The company's research products have found a permanent place in the safe treatment option for medical practitioners in skin diseases like psoriasis, vitiligo, immune disorder, hair care, and pain management. The company was recognized as one of the India's 25 most innovative companies in India by CII in 2019. It has been recognized as one of the India's top 100 SME companies by the India SME Forum and the Ministry of MSME. The company has over 150 international and domestic research publications covering various aspects of safety, efficacy, mechanism of action in regard to the products. I would like to welcome Mr. Rajagopal. Welcome. Thank you very much, Sharma ji, and very detailed note that you have presented. Thank you, and I'm very honored to be present amongst such eminent dignitaries. It was a real surprise to receive an invite from you, and it's really happy to be here. And
as Dr. Sharma mentioned, that the Siddha system of medicine has also played a small role in the efficacious management of the current problem, the topic of today's discussion. So I have put together a small presentation. I thought I will use that as a reference for the discussion. Can you hear me? Yes, yes. So I will be sharing a presentation and I will have the discussion that could follow that. So if you permit me, I will share the presentation. Yes, you can. You can. So I would like to know whether the screen is visible. Yes. Okay, so first of all, Kindly I'm very honored to be the first of the person to share this. So I hope it will live up to the expectation of the scope of the session. So the topic is Ayush, the best prevention for third wave of COVID 2019. And I would like to specifically focus on the treatment options which are there from the Siddha system. So just to give a very quick idea, I'm sure all the eminent the industry and academicians here are very much aware of Siddha, but just for the just a very quick recap, Siddha system is a recognized system of medicine under the Ayush stream. It's S in Ayush stands for Siddha. And it's a system of medicine which is more than 5,000 years in existence and practice. Very rich literature and references are available, most of which are in Tamil, and many of them have been translated into English as well. The system has its origin in the southern parts of India, particularly Tamil Nadu, and it's also slowly getting global recognition. And I'm very honored to say that in a small way, our company has played a small role in reaching the Siddha system and the products in quite a few countries outside India, including Malaysia, Mauritius, Sri Lanka, Middle East, and a few other countries as well. I must also say that there is a lot of research work going on in the Central Council of Research in Siddha based in Chennai, and also private organizations like ours. So a lot of evidence-based work is being done. Fundamental research is also being done, thanks to support from the Ministry of Ayush and the government of Tamil Nadu. So that's a very quick brief about the system. Let me also take this unique opportunity to share a little bit about Dr. JRK's research. As mentioned earlier, this company is now moving towards its 30th year, and I would like to fondly recall my late father and Padma Shri, Dr. J.R. Krishnamurthy ji, who started this organization. With this outcome of a unique research, Dr. JRK's 777 oil, which is happening to be a well-known brand for the management of psoriasis. So we have taken it on from there and built a professional team to manufacture and do research and for various problems based on the Siddha system of medicine. And our efforts has largely been in trying to make a scientific explanation which is acceptable and understandable by all systems of practitioners. So we have made some inroads in that, and very happy to say that the acceptance of the system of medicine as well as the research outcomes have been quite encouraging both in India and outside. As already shared, we have been recognized, and we are happy to mention that Innovations Award, which was given, where it included not only the pharmaceutical companies, but it also included large Indian organizations coming from the Tatas and the L&Ts. And so we have been typically working on making contemporary presentations for traditional systems.
जैसा है पब्लिक का लाइफस्टाइल जब बदल रहा है उसके हिसाब से जब हम ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस उनको देंगे तो acceptability or retention of usage is also very high. That is our understanding, and that's how we came out with some unique formulations and also presentation of traditional medicines in modern usable forms. So that was the award. Let me take on to the today's presentation, which covers, as one of our colleagues said, Omicron is in the center of the third wave. What are the typical symptoms? I don't need to, I just thought I'll just glance through it. And then Siddha treatment approach for the COVID. And I would also like to refer to the initiatives by the government of Tamil Nadu and the studies and evaluations done by the Central Council for Research in Siddha. And I would also like to take this opportunity to present a few research formulations from our side, which can support and are supporting the COVID and post-COVID treatment, particularly in comorbid conditions. And as is well accepted in the Ayush system and also globally, that the long-term solution for the management of any such global problem will be to ensure that everybody is well protected themselves by having a good immune, their own immune system well used to. So yes, we are all in the middle of this third wave, which had this origin with one strain of virus. So I don't want to go too much into the details. It's just hardly few months, but it's already a household word across the medical fraternity. Third wave has come with some slight variations in the terms of the symptoms, headache, fatigue, cough, congestion, running nose, sore throat. So ये सब ये common symptoms है. Public are being made aware through various forums by the government, and I must say doctors from all systems of medicine have made a great contribution in making sure that people are able to keep their fear factor very much under control by constant education on these things, and the manageability is fortunately now becoming well understood and established in many systems. The Siddha treatment approach for COVID has been there in the last few waves, 2 waves, and fortunately the current situation, also the recommendations by experts as well as the government of India through Ayush Ministry. Kabasura Kudinir, which is multi-herbal concoction, has been in the forefront of the Siddha medicines for management of COVID symptoms as well as a prophylactic. So the problem of COVID has been largely the respiratory tract infection led, and therefore kabab and suram. Suram is fever. So the effective management of IS suram, that is the dominant symptom of respiratory problems, has been well understood and addressed by this traditional medicine. This is a classical medicine and has been in use, and as I will share in the subsequent slides, has been widely distributed and well accepted by the public as well as the doctors, and has shown a lot of clinical benefits. So in the asymptomatic cases, the use of Kabasura Kudinir and Amukara, which is Ashwagandha Churnam, and Nellikai, which is nothing but Amla Legya. So this in asymptomatic cases, this treatment protocol has been presented, and doctors are very much satisfied with the progress, and also in a multidisciplinary approach, the combination of even well-known
modern medicinal systems together with Kabasara Kudineer has also been successfully attempted. And in mild COVID symptoms, formulation called Thalisadi Vadagam, which is particularly where there are throat infections, throat irritation, and Ada Thoda, of course, all of you must be familiar in the Ayurveda, Ada Thoda Vasika, and Ada Thoda syrup or Manapag, and Nellika Legium, Kabasara Kudineer, and Seendil Churnam. Seendil is the Tamil name for Guduchi. So as you can see that there are a lot of common aspects between Ayush, Ayurveda and Siddha also. A lot of formulations like Seendil or Guduchi and Amla is also very much present. So this was the treatment protocol for COVID and has been widely practiced by both Siddha practitioners as well as traditional medicinal practitioners. And the government through the Ayush Ministry has also recommended a clear protocol covering all this. So this is also very much applicable to the third wave and has been actively practiced. One of the points is that the comorbid conditions के लिए, particularly fever with respiratory, a few more situations, particularly diabetes conditions, Nilavembu Kudineer, which is also a decoction type of preparation, Seendil, and Kiranelli Churnam is there. In case of hypertension, this is Siragam, which is cumin seeds, and garlic milk and Nilavembu Kudineer and coriander seeds and Siragam, that is for pregnant women. And in case of children who are having such symptoms, comorbid, Urai Makire and Adi Madura, which is Glyceria glabla, which is licorice, as you know, and Nellika Legium, Bala Sanjeevi Makire. So I don't want to keep reading it. Essentially, a well planned approach to the management of COVID, not only the problem, but also in case of patients who are having comorbid conditions and different age group of patients, including pediatric and adult population, and lactating period has been drawn out. And all these are classical Siddha medicines. So I just want to say that the wonderful formulations of our ancient times have come actually very handy and are purposeful even during the unfortunate modern so-called problems which are created and coming as Omicron or in so many more strains. I think these formulations will stand the test of time as always has been. काफी स्टडीज हुए हैं इसके बारे में even before COVID, but particularly after COVID has started, the CCRS has, along with the directions from the Ayush Ministry, has taken up Kabasara Kudineer evaluation both at the laboratory level as well as in the clinical data level. So plenty of studies, as you can see, more than 15 studies have been done covering various aspects of preclinical and mechanisms of action, establishing the antiviral activity, immunomodulatory activity, and also the efficacy, clinical efficacy has been established. Combination treatment has been evaluated. So I must say the work done by the CCRS has been quite commendable, and a lot of publications have also been done. So this is a few more, another 10-15 studies have been done. I'm sure all this will make the claim of the treatment efficacy far more believable. एक तो प्रॉब्लम है कि believability of आयुष system is always under question. क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, इसके लिए ऐसा स्टडीज करना और रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. और सिद्धा सिस्टम में ये शुरू हुआ है, particularly after COVID, and I'm sure it will help in ensuring
it finds a regular place in the management of so many other problems which can be solved. Kabasara Kudineer or Nilavembu Kudineer actually was distributed as a prophylactic to the people of Tamil Nadu by the government itself, and ऐसा हो गया कि एक हाउसहोल्ड नेम कबसरा कुडिनीर और नीलवेंबु कुडिनीर एक हाउसहोल्ड नेम हो गया ताकि लोग ये सिम्टम्स को अपने आप को संभाल सकते हैं और होम क्वारंटाइन में लोग कबसरा कुडिनीर और नीलवेंबु कुडिनीर sometimes standalone it has worked or along with other systems of medicine also it is being administered to make sure that the treatment speed of recovery particularly in viral infections नीलवेंबु कुडिनीर का ये रोल इसके पहले जो प्रॉब्लम था एक long system I mean there was a problem of dengue about 5-6 years ago, and Nilavembu Kudineer turned out to be a wonderful formulation for managing that particular viral attack. So these two Siddha formulations have been widely distributed by the government of Tamil Nadu to the people, and in a way, I think it has helped in preventing the problem from going even worse, and the side effects of other systems have also been kept under control. So these are some of the pictures of the ministers and health secretaries are actively, and I'm very happy to say that separate Siddha treatment centers have been established and across the state in small and big towns. So the public का एक choice है और मेरे ख्याल से पब्लिक का automatically people are particularly asymptomatic cases, mild symptoms, Siddha treatment has been actively taken up. I'll just, as you were saying, the innovation from Dr. JRK side, यही कहपसरा कुडिनीर का प्रिपरेशन मेथड जो है लोगों को उतना आसान नहीं पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है और उसके बाद फिल्टर करना पड़ेगा, तो जो अच्छे ड्रग है लेकिन लोग का इस्तेमाल करने में, प्रिपेयर करने में आम जनता को काफ़ी मुश्किल होता है, इसके कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. तो फ्रॉम आवर एंड वी केम आउट विद अ रेडी टू ड्रिंक वर्जन वेयर ऑल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट is to mix it with warm water and take it. So a ready to drink version has been well accepted. We have established that it does not compromise anything about all the HPTLC studies have been done to establish that without any difference from the conventional systems, the ready to drink version is there. We have also हमारी तरफ से एक studies किया है how the fever, particularly the respiratory fever problems is taking. We have done the study to establish that the role, how the mechanism of action of Kabasara Kudineer is there in the way it binds and prevents. So there is a study done. Same with Nilavembu Kudineer. It's a supportive drug for fever associated with not only now being recommended for this third wave and also in the previous waves, previous problems which were affecting the public, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसके लिए भी एक खास formulation है. We also have a few research formulations, particularly for children. We have come out with this thing, but RSV is a respiratory syncytial virus. इसके against, particularly in COVID conditions, children with upper respiratory tract infections can be well managed with this unique formulation. इसका भी studies किए हैं हम और international journals में publish किए हैं इसको. और textbook of respiratory diseases. It is a modern medicinal chapter on respiratory diseases. इसमें alternative treatment for the problem has been published, and ये जो formulation हमने दिखाया ये वहाँ पर reference किया हुआ.
So this is what it is. Textbook of this, ये एक किताब है और diseases के बारे में वहाँ पर publish हुआ है. Similarly, एक और formulation है जो phagocyte mediated immunity को अच्छा increase करता है. We have established this scientifically. So Siddha formulation, and it's called SIV drug. So this is also something that patients can take for the long term and ensure that they are benefited from being protected against any viral infection of any order. So ये दो, एक for pediatric and then for adults, they can continue to take this in the long term and be free from opportunistic infections which are there. So it's been clinically evaluated. And this is what I would present as the COVID approach to the management, combining Kabasarakurinir as well as Nilavembakurinir, and also some research formulations from our side which can take care. Of course, Amukara or Ashwagandha along with Sindil or Guruchi will be a good supporting treatment for long term. तो हमारा आशा है कि और रिसर्च इस फील्ड में बढ़े और सिद्धा की तरफ से और आयुष की तरफ से we continue to do our little bit, and we have eminent people here. A lot of work must also be done in this area already. So I thank Pawan ji for giving this wonderful opportunity. I hope it made some information available to you, and we'll be happy to share more information in case any of you are interested. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you, Rajagopal ji. Thank you very much. Excellent. You have compiled all the aspects from Siddha, and really I appreciate your zeal of innovativeness, inventions, really. And personally, I would like to communicate this also. I am fan of your anti-psoriasis and anti-vitiligo products, and I am writing from last 30 years. So yes, your products have effect. Excellent, excellent, doctor. Excellent, Rajagopal ji. Now I would like to request from Ayurveda, Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, our guardian of the platform. Welcome, Dr. Agnihotri ji. Welcome. So, Vishnu Prasad Sharma ji is former principal of Government Ayurvedic College, Guwahati, and now president of Vishwa Ayurved Parishad, ASSAM. Welcome, sir. Welcome. Now, dice is yours, sir. Okay. I want to share screen. Right, sir. You can. Yes, sir. Your screen is visible. You can go for slideshow. Yes, sir. It is visible. Welcome, sir. So good afternoon to everybody. Namaskar to Pawan Kumar Sharma ji, VK Agnihotri ji, respected guests, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today I will speak on Ayurveda best prevention for third wave. Dear friends, you know Ayurveda is the science of life which deals with all those aspects which are related to life. Main aim of Ayurveda is to preserve positive health in healthy and afford relief from the disease in sick. That means Ayurveda have two aspects, preventive aspect and curative aspect. Ayurveda has given more stress on preventive aspect than the curative aspect. For that, we have one therapy that is known as Rasayan therapy. Rasayan therapy means use of some herbs and follow the rules and regulations for
maintain health. So COVID-19 is found all over the world, in India, in Assam also. So we have to take help from the nature, whatever mentioned in our Ayurvedic classic, that is known as Rasayana drugs. So world is facing an unprecedented pandemic, novel coronavirus disease, COVID-19, caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus. Despite worldwide efforts to contain it, the pandemic is continuing to spread. Presently, there is no clinically proven prophylaxis and therapeutic strategy in the modern science. This underlines the requirement of an urgent harnessing of all knowledge systems available world over. Utilization of traditional medicine in China to combat COVID-19 cases shows that traditional healthcare can contribute to treatment of this patient successfully. As no system of medicine has any evidence-based treatment for COVID-19 as yet, clinically, intervention of different systems of medicine are being done worldwide. In this context, Ayurveda intervention become relevant as we find an elaborate description of causation and management of epidemic Janapada Dhangsa in Ayurveda classics. In India has undertaken to utilize the vast potential of Ayurveda in this pandemic. The Ministry of Ayush has released a set of guidelines for boosting immunity and measure for self-care by using Ayurvedic principle. It would be useful to take a look into the scientific basis of these measures, which have been strongly advocated by the Ayush Ministry. So Ayush has given how the body natural defense system, we can increase the body immunity power. Ayush has given to please drink warm water throughout the day. And if you drink ginger water throughout the day, it will be more helpful. It will be more helpful. If you consume ginger drink water, there will be no harm. Again, Ayurveda has given stress, daily practice of yogasana, pranayama, and meditation for 30 minutes. Again, Ayurveda has given stress, use haldi, jeera, dhania, losun in cooking. In India, we are using these things. Spices are used. India, in all cuisine system, we use masala. So some of the procedure. So if we use noisha, protimorsa noisha, nasal application of sesame oil, coconut oil, ghee, onu tail in both the nostril in the morning and evening, it will be helpful. Again, oil pulling therapy. So oil pulling therapy, take 1 taste of sesame oil or coconut oil in mouth. Do not drink. Swish in the mouth for 2 to 3 minutes and spit it off, followed by warm water rinse. This can be done once or twice in a day. Nasal oil application, the application of medicated oil made from butter oil, ghee, and vegetable oil such as sesame, coconut oil, or onu tail in the nostril may protect the respiratory tract from the pathogen entry. Application of pure sesame oil was found to be effective for the treatment of dry nasal mucosa. Traditional Chinese medicine has already proposed the use of nasal oil application
for preventing SARS-CoV-2 infection. Again, during sore throat and cough, we can use steam inhalation with the fresh podina leaves, ajwain. Can practice once or twice in a day. It will be more helpful. Like this way, we can take the inhalation, take the vapor. Or now that instrument is also there, we can use this podina there. If we take this twice or thrice in a day, it will be more helpful. So again, regarding sore throat, we can consume clove, lavang with honey 2 to 3 times in a day. After taking this lavang also, if sore throat is persistent, then you have to consult with doctor. And Ayurvedic immunity enhancing tips. Yes, we have 7+. Since the long period we are using, take 7+, 10 grams, 1 TSF in the morning. Diabetic patient can take sugar-free 7+, or you can take Drakha Obole also. Again, herbal tea, which is in our Assam, at our Ayurvedic college, we prepared and we supply to police officer, to minister, to high officer. This preparation from the tulsi, dalchini, kalimirch, sunthi. Then we add munakka or jagari or honey. We have to take 200 ml water, this composition, boil it, reduce to 50 ml, then add according to taste, either munakka or jagari or honey or lemon juice. So what happened after taking this kara, if we consume such type of kara, this oxygen absorption capacity increases in our lung. Again, golden milk is famous not only in India, all over the world. Take half teaspoon haldi powder in 150 ml of whole milk. Consume once or twice in a day. So again, common health keeping approach of Ayurveda, including healthy diet, healthy lifestyle, adequate sleep, physical activity, good conduct, care for the retainable and non-retainable urges, and avoidance of disease-causing factor, excessive cold and exposure to the pollutant, along with consumption of 7+, Brahmarasan, Amrit Bhallatak, Sanjivani Bhati, Swarnaprasan. So expose asymptomatic quarantine. Use of medicine like Sanjivani Bhati, Chitrakari Bhati, 7+, Brahmarasan we can prescribe. And decoction of some herbs, mainly Tinospora cordifolia, Gingiva officinalis, Curcuma langa, Osium sanctum, Glycyrrhizia glabra, Odotota basica, Andrographis paniculata, Cereata, Moringa olifera, Trifola, and Trichotu. So with mild COVID-19 symptoms, we use Ayurvedic drugs, Pippali Rasayan, Kontokari Obole, Chitrakari Obole, Begri Horiteki, Dosomul Quat, Sitopoladi Surna, Talisadi Surna, Jostimodo, along with Probal Bhasma, Sitopoladi and Talisadi, we use Probal Bhasma also. With moderate use of Pippali Rasayan, Logo Basanta Malati, Sanjivani Bhati, Tribhuvan Kirti Ras, Brihat Bhat Chintamani Ras, Mrityunjay Ras, Siddhamakra Ras. These interventions are supposed to be practiced without compromising the conventional advisory by the government authority. We have to select which one will be helpful. Again, in Ayurvedic classics, it is mentioned some of the herbs which by consuming we can increase our body immunity, because yes, whatever protocol is there, yes, we have to take the vaccine. Nowadays,
for this booster dose is also there. We can prevent the disease, but along with whatever nature has given, if we consume, if we keep our body immunity intact, then we will be free from lots of diseases, including corona, Omicron, Delta virus. So among them, these plants are Amlaki, Tinospora cordifolia gurusi, Withenia somnifera, Ashwagandha, Sotaburi, Glycyrrhiza, glabra have been used clinically for several years to strengthen immunity and rejuvenation. So you know Phyllanthus umbilica Amlaki, it contains more vitamin C. Amlaki is renowned for its immunity and anti-aging benefit. Amlaki, commonly known as the Indian gooseberry, is the term used for Ayurvedic medicinal use of the fruits of the amla tree. It is considered the mother as it is performed the job of taking total care of the mind-body system and is known as the ultimate healer due to its immune restorative properties. Rich vitamin C content, the highest source of heat-stable vitamin C. If we boil the amla, the vitamin C percentage not comes down. Source of polyphenols and support digestion, metabolism, elimination, and normal liver function. Next, this wonderful plant, Gurusi, Tinospora cordifolia, in our northeastern region, Assam, it is freely available. So we ask the people, please consume Gurusi. If fresh plant is available, take 2 inches or 3 inches this stem, apply, press there, keep it in 1 cup of water overnight, make it paste, add water, keep it overnight, then early morning, consume it, again afternoon and evening. It also help, Gurusi help build the body's immune resistance because it have antiviral properties. Giloy is an Ayurvedic herb that is also held as the Ayurvedic root for immortality. Giloy is a powerhouse of antioxidant which help in detoxing the body and reducing free radical activity. Giloy is also rich in antimicrobial properties and is used in various Ayurvedic treatment. So it is freely available now in the market, Gurusi powder, Gurusi capsule, Gurusi tablet, then Gurusi Soros is also available. So it is one of the most frequent used medicinal plant in Ayurveda. Several animal studies have shown its potent anti-inflammatory effect. Along with anti-inflammatory effect, Gurusi has also good anti-allergic effect, antipyretic action, as well as hypoglycemic and hypolipidemic action as proven by several studies. Giloy plant is an Ayurvedic herb that has been used and advocated in Indian medicine for ages, from treating chronic fever to boosting digestion and immunity. So Giloy is a universal boost immunity. It is a powerhouse of antioxidant which fight free radicals, keep your cell healthy, and get rid of diseases. Giloy helps remove toxin, purifies blood, fight bacteria that causes disease. Giloy is popularly known for its anti-inflammatory benefits and help reduce respiratory problems like frequent cough, cold, tonsil, etc. Next, Haldi. Since the long period, in India, we are using Haldi to maintain our skin, to develop body immunity. So if we consume Haldi Soros, 40 of Soros with 100 ml of milk or half TSF powder with 150 ml hot milk, it will increase our body immunity.
Turmeric is one Ayurvedic ingredient that has made Ayurveda popular all around the world, with the Western world adopting to the consumption of turmeric in the form of tablet indigenously. Turmeric is used as a common spice added to food in India. Golden milk, also known as Haldi Dudh, is often used to treat muscle pain or even as first aid in case of an injury. Turmeric contains many components that can help fight diseases. Its incredible list of healing properties include antioxidant, antiviral, antibacterial, antifungal, anticarcinogenic, anti-mutagenic, and anti-inflammatory. Tulsi. We are using Tulsi to increase our body immunity. Tulsi is one of the key ingredients used in Ayurvedic medicine. Tulsi, also known as the holy basil, is popular all around the world for its medicinal properties. You can add Tulsi to your kadha for immunity, herbal teas, etc., or can just chew a few leaves on empty stomach. Tulsi is rich in antimicrobial, anti-inflammatory property and is known to improve immunity against pathogens, especially those that cause respiratory and throat infection. So if we have no problem also, we can consume these herbs. There will be no harm. Various studies have reported antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, antimicrobial activity in leaves of Tulsi. Extract of leaves of Tulsi have shown significant virucidal activity, H9N2, in a study in ovo model conducted by Govt SS et al. Virucidal activity was through multiple mechanisms of action. Specific inhibition of a stage in viral intracellular multiplication. Holy basil is antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory, and analgesic painkiller. Again, various studies have reported antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, antimicrobial activity of leaves of Tulsi. An article on effect of Tulsi as a disinfectant for water treatment studied the antimicrobial effect with different concentration, 100 to 600 milligram of Tulsi leaf extract in tap or river water. It found that 600 milligram concentration of the plant extract treated water shown effective antimicrobial activity at 15 to 16 hours. 500 milligram of extract treated water showed 95 to 98 antibacterial activity in 14 to 16 hours. So holy basil, also known as Tulsi, has been shown to increase immunity, which may help fight viral infection. In 4-week study in 24 healthy adults, supplementing with 300 milligram of holy basil extract significantly increased level of helper T cells and natural killer cell, both of which are immune cells that help protect and defend your body from viral infection. So we can consume more Tulsi, there will be no harm. Again, Dalchini. So several reports have dealt with the numerous properties of cinnamon in the form of bark essential oil, bark powder, phenolic compound, flavonoid, and isolated component. The antioxidant and antimicrobial activities may occur through the direct action on oxidant or microbes, whereas the anti-inflammatory activity occurs indirectly via receptor-mediated mechanism. So health benefit of cinnamon, that blood sugar control, it controls the blood sugar, fight yeast infection, assess stomach bug, flu,
prevent irritable bowel syndrome, cancer preventer, effective against arthritis, osteoporosis, antibacterial, antifungal, antimicrobial property, food preservative, odor neutralizer, prevent tooth decay, gum disease, nutrient, insect repellent, treat cold, sore throat and cough, beneficial effect on neurodegenerative diseases, virus fighter. So we can consume this cinnamon powder. Again, adrak, yes, if we consume adrak water during this pandemic period, we can keep our body healthy and kept free from this virus disease. Ginger or dry ginger is used as a common ingredient in Ayurveda. Ginger is rich in antibacterial, anti-inflammatory properties and is used as a common home remedy for cough and cold. It is form cough and cold in the form of tea or kara. It can help boost immunity naturally. Ginger has been potent of healing strategy in Asia, India, Europe, and the Middle East for the century for treatment of several disorders. There are preliminary data that ginger has antimicrobial potential. Based on evidence primarily from animal and in vitro studies, ginger has beneficial effect towards cardiovascular disease through its multiple action, counteracting inflammation, hyperlipidemia, platelet aggregation, and hypertension. Ginger has impressive antiviral, antibacterial, anti-inflammatory properties. Studies suggest that this herb is effective in avian influenza, RSV, and feline calcivirus. Ginger contain compounds such as gingerol and gingerone that help to prevent the growth of the virus. So we can consume, no problem. In Japan, a study showed that ginger helped to inhibit influenza virus replication by stimulating the production of TNF-alpha expression by the immune system. Further, the presence of the compound allicin help inhibit the virus by interacting with its binding capacity. Again, calmers, we are using in Karha also. Pepper contain an impressive list of plant-derived chemical compounds known to have disease-preventing and health-promoting properties. Black pepper have been in use since centuries for their anti-inflammatory, carminative, anti-flatulent properties. Piperine is the main bioactive constituent of pepper. In a study, different age groups suffering from frequent asthma attack, long-term administration of long pepper fruits significantly reduced the frequency and severity of the attack. Experimental evidence shows that piperine has anti-inflammatory and antioxidant properties. So again, ashwagandha is nowadays famous all over the world. Yes, we Indian people, we use it as a anti-depression also. It gives strength also. It has aphrodisiac properties also. Ashwagandha is another Ayurvedic herb that has been used in various treatments. It is good for physical as well as mental health. Ashwagandha can help people with stress, anxiety, or insomnia, as it helps to calm the mind down. Since sleep plays such an important role in overall health, ashwagandha is an important Ayurvedic herb to keep your body and mind healthy. It is also rich in antioxidant and helps in boosting immunity. We can consume this ashwagandha,
ashwagandha powder 5 to 6 grams with a 1 glass of or 1 glass of or 1 cup of milk twice daily. Again, pudina. Pudina having also powerful antiviral qualities. Its leaf and essential oils contains active component including menthol and rosmarinic acid, which have antiviral and anti-inflammatory activity. In a test tube study, peppermint leaf extract exhibit potent antiviral activity against respiratory syncytial virus and significantly decrease level of inflammatory compound. So, pudina is available all over India. Korean ginseng. So ginseng, which can be found in Korean and American varieties, is the root of plant in the Panax family, long used in traditional Chinese medicine. It has been shown to be particularly effective at fighting viruses. So we can consume. Again, losuno is a wonderful. Garlic is a popular natural remedy for a wide array of conditions, including viral infection. Animal and test tube study indicate that garlic enhances immune system response by stimulating protective immune cells, which may safeguard against viral infection. So we can consume. Then again, natural disinfectant. So this we can consume this herb, karha, golden meal. Yes, not only COVID-19, this Omicron and Delta virus also, natural disinfectant. We have some, instead of using alcohol preparation sanitizer, we have herbs, so many herbs are there that it kills the germ also. For example, we can clean our hand with tulsi quat, or we can rub the leaves in our hand. Tulsi oil too has been found to be effective disinfectant and can use as an alternative autoclaving against Enterococcus facialis microorganism. Again, neem also, we can make neem quat, we can clean our hand instead of using alcohol preparation sanitizer. Again, Monjista also use antibacterial and antimicrobial. These herbs contain natural substance like tannins and sulfur that give ability to eliminate bacterial infection. Immunity enhancer, it helps to boost immunity and increase the white blood cells of immune system. The herb increases strength of the body to fight against the various infection and debilitating diseases. So this is Monjista. Kumari, aloe vera used in making hand sanitizer. All the reported finding of various research studies related to antimicrobial properties of aloe vera support the evidence of using aloe vera as a disinfectant. This is aloe vera. Fresh aloe vera also we can rub in our hand to clean the hand. We can use gugulu for dhupon at our house. We can use this gugulu as a dhupon. Citronella also we can use to clean the floor. Kaurine also we can use the floor as a disinfectant. Lemongrass also we can apply. And lemon also we can use during bathing time to cleanse our body. Borax essential oil we can use. Then with the help of, we keep in autoclave the herbs, gurusi, haldi, or whatever is available, we can clean the floor, or hot water also we can use. We can haldi water also we can use, gurusi water. With these few words, I conclude my lecture. Thank you to all. So we have to take help from the nature. We have to take help from the nature. Nature has given us everything.
it is our duty to collect, and which will show very good result, And beauty is there. If you have no disease also, if you consume, there will be no harm. Right. Thank you. Namaskar, sir. Thank you. Excellent, sir. Great. You have covered all. Now I would like to request Dr. Sarveshwar Kr ji. Dr. Sarveshwar Kr was supposed to speak, but some program was disturbed. He has served as head of Indian Institute of Ayurvedic Medicine and Research, Bangalore, JSS Ayurvedic Medical College, Mysore, Sri College of Ayurvedic Science and Research, Bangalore, SDM Institute of Ayurveda and Hospital, Bangalore. Welcome, welcome, sir. Welcome, Dr. Sarveshwar Kr ji. If you are in a position to guide us, welcome. My respectful pranams to everybody. Sharma ji, namaste. Namaste. And profound respect to the previous speakers and all the esteemed guest speakers of today. And our most importantly, first program. Because of inevitable, I could not able to manage it properly because today I supposed to be with my family in as the curfew is relaxed here. However, today program it was a need of the hour, and two things I want to quickly convey from my end to the previous speakers. So this understanding this Haridra, that's turmeric. It is what we understood today. Taking further the research, plenty of research is done. Probably maximum research is coming up in Haridra now. Taking back to this publication, if you look for the Dasamanani, 10 drugs in one group. I'm audible, sir. Sharma ji, hello. Sharma ji, I'm audible. Yes. You are audible. Yes. Haridra was recognized not only as the spicy. Haridra was first recognized in the Charak Samhita, that was properly given as a Bishara Dravyas. The 10 drugs which they have identified, Haridra is one among that, sir. Rather, it is a number drug serial number 1, Haridra, which was recognized as the Bishara. And further taking over, it has also plentifully been mentioned about its spicy properties. And now we are looking for its as a golden milk, as a curcumin. They are all extract. Yesterday also been spoken a lot about in the hospital kitchen. So now how we have to sensitize the people en mass, and how much dose to be taken, how frequently should be taken, and what are the it should be taken individually or mixing with some other drugs. These are the things which is IUC is doing plentifully. That sensitization going on, and we are part of that. Number 2, coming back to the sir was talking about the individual drugs like tulsi. Then sir has spoken about our ginger. If you look for the classical preparation, sir, Trivana Kirti Rasa, if you looking which is the drug of choice today, and it was there in the past. This contains bhavana with these 3 drugs, sir. The Trivana Kirti Rasa, which is Hingula, Bashanava, Tankana, Trikotu, and Pipalimula. It is given bhavana with these 3 important medicinal herbs, which is tulsi, ginger, that's called sunti, and also we have dhatura patra, which we call it is a analgesic and vasodilators. So and this also it is a bishahara dhatura. So this is I don't know how this scientific component has been embedded with our तब तक कैसे था चिंताधारा. ये जोगरत्नकर का ये है what you call preparations है.
ये 3 रस में देने के क्या जरूरत था, अभी हम समझ में आ रहे हैं. देखिए, तुलसी is covering the viral aspects. Ginger is covering the anti-infective and also the enzymatical aspects. We are talking about the Agni, Dipana, Pachana, whatever in Ayurvedic aspects we are talking about. That is taken care by ginger or Sunti Shorasa. Then now again, Datura is there, which is we are looking for analgesic. So this the concept our new generation has to be understand and has to be confident in our preparations to practice and to practice for own purpose. Because wo Tribhuvanakiti Rasa was a old patent medicine, classical medicines. Let me look for something new. It's fine, but classical preparations are well available. One more things I also want to submit to here. Looking for this is Dasamula Katutra Kasaya, which is once again a Sahasrayoga preparations. Now everybody is looking for the anti-inflammatory activities, what modern is looking for really. Antiviral they are giving, but they are looking for the entirely the structural cytokine storm, which is really second wave was a matter of discussion. So look for that preparation, Dasamula Katutra Kasaya. So if these preparations, which Ayush 64 is one of that, Ayush department has highlighted, we have also published a paper in that, whether it is a myth or it is a reality. We have brought Ayush 64 in its scientific basis. It has been published. And similarly, also we are looking for one more aspect of where is third wave can be so than the second wave. No, it has been already taken care. Now what is happening now? Sir, everybody is having the upper respiratory difficulties, like rhinitis, we call it is pratisaya, and pratisaya related diseases. Then let us look for how this upper respiratory tract infection can be controlled. Sir was talking about you have to go for the stimulation. Then can they take the steam? If they are not able to take the, what they can do, staying in the or they are leaving in the room. That room repeatedly can be fumigated, and that room can be make it warm with our medicated preparations. And we have Barachaturveda Rasa, that is Musta, Ativishta, Karkarsungi. So these are the 4 composition which is highly advisable in the respiratory and upper respiratory tract infections. That can also be used for the and it is available in the syrup format. Dupa Parisad company is preparing Barachaturveda syrup. It was available in the powder format since last second wave, and we are thankful to Dupa Parisad company. They are bringing down Barachaturveda syrup. So these are the scientific thoughts already was there in our classical text. The new generation, our Vaidyas, new budding doctors, they should understand how to prevent. Prevention is not an easy job. It has to be started with the sensitizing. It is in the family level, then it is a community level, and it is in a national level. It is not so easy to say that something you have to practice. Practice is a habit. Therefore, we are learning from our forefathers the good practices. In between, we are living many other things, and food is rapidly changing. So the changing of the rapid food also, we have to shift over the traditional food. Yesterday, Sharma ji was talking about a big chapter, hospital kitchen. So this, look for one thing I want to answer. Haridra is not only to take as a golden milk. Haridra has been a part of our traditional life, cultural life. We have to add Haridra for everything, because it's required a higher dosage in the body. It's required a higher dosage in the body. Curcumin, which is extract, is taken over now. Why it is? Because Haridra, what you are taking it is medicinally 1 to 2 gram. It is not enough. Curcumin is required more as extraction. Therefore, curcumin tablet or extraction is coming up. Therefore, if you take Haridra, it is there in the sambar, it is in the dal, it is in the curry. Everywhere Haridra is added. So that quantity of Haridra taking every day, it is giving the better plasma bioavailability. So that is protecting the body as a Vishara Dravyas. What I want to submit to your good self and to our listeners. Therefore, my humble submission is, let us look ourselves how confident we are in our science, and how
we understand scientific background of our Acharyas has said, Charak, Sushta, Bhagavata, whoever, till the today's, anybody has said something new, like our Atrimed company, Dr. Damle has newly has brought a big research in the combating COVID-19 preparations. Lot of things are going on. And so also Sharmaji also talking about a lot of other preparations. I think I am taken a little bit of more time. I have assured Sharmaji to forgive me because there was difficulties for me to be in my chamber to take more time about this. Over to Sharmaji with thanks notes. Thank you, Doctor. Thank you, and salute to you for your zeal and passion. Thank you. So nice of you. Namaste. So nice of you. One more thing, After Sharmaji, all hurdles, after all, Sharmaji, one more thing I want to add to the young generation. In my practice, if you are getting symptomatic of Pratisaya in this third wave, please practice Nityananda Rasa. Please practice, the new generation, those are listening now, please practice Nityananda Rasa of Vaidnath company or any other company you are getting it. 2 tablet, 3 times a day in the starting dose for 5 days. Then you bring down to 2 tablet, twice a day, that means 4 tablets in a day for another 5 days. This will be take care with Varnajamani Sorasa. Varnajamani Sorasa, which is available in everybody's garden, that can be taken clean properly and can be little warm in the tawa, chapati tawa, that you can press it, sir, you will get the juice. So that can be given to the children also, mixing with the honey. This is one of my innovative thoughts to the present third wave. This can be plenty useful and it is helping out, sir. Nityananda Rasa. Very great. Depending upon the condition and the age, those can be varied, sir. Yes. And I think my co-colleague, Dr. Reddy, sir, he can update you. We have been at JSS, we have done a lot of work for this. Dr. Bina, his wife also, Professor Bina, they have also worked with us. We have preventive kit, we have rejuvenation kit. I request Dr. Reddy, sir, please, because I am traveling. Dr. Reddy? Sharma, sir, we have from JSS, we have released 3 kits. One is Balarasayana for children in the second wave. We have also released in that this our Dutapa Peshara Bal Chaturveda syrup also was there, one among that. And also Sonoprashana. Then we have also post-COVID rejuvenation kit, Ayush kit also we have released. And we have also immune boosting kit also we have released to prevent it. So this is our contribution of JSS. If Dr. Reddy will be speaking further, he can contribute to you, sir. Thank you very much. Over to you, sir. Thank you. Great. Thank you, sir. I have 5 publications. Out of that, 2 are cited in the WHO. Thank you very much. Thank you, Dr. Sarveshwarji. Thank you very much. So now, before calling next speaker, Reddy ji, would you like to add something from Ayurveda? Dr. Sudhakar Reddy ji. Yes, sir. Good evening, sir. Hari Om. Good evening, all respected dignitaries, Sharma sir ji and Agnihoti sir, my respected Sarveshwar sir. And sir has given all the important recipes which are innovative, because always our Sarveshwar sir will search the innovative. Now the innovative is Nityananda Rasa. We never expect that Nityananda Rasa will be useful in the Pratishaya cases. So that way, he says that the analytical aspect of the formulations, etc. And adding to our Sarveshwar Sarji, we have prepared 3 formulas for COVID-19. One is for post-COVID kit and one is for kids
that's immuno kits, and another one based on the Andhra Pradesh, Anandaya, he has prepared one medicine. I think all over India it became famous. People may be knowing. He has prepared some kashaya, fresh kashaya, and he was giving to the people. And based on that, now we are going to conduct a clinical trial. Scientifically, we want to prove that how far it is true. For this purpose, last second wave only we tried, but there the ethical issues came because it dropped. Now in third wave, we are applied for the ethical committee, and we are going to conduct the trial, which consists of the Arka Pushpa, Jambu Patra Pallava, Nimba Patra Pallava, Bilva Patra Pallava, Devadali, Harita Manjari, Bhumyamalaki, Brungaraja, Bruhat Gokshira, and Guduchi. So these drugs we are going to prepare as a kashaya. That fresh kashaya we are going to administer 25 ml kashaya with 25 ml of warm water and 1 teaspoon of honey 2 times daily after food for 7 days. This formula we are going to trial on COVID mild positive patients. So this is we are going to add, sir. And another one already our principal sir explained that post-COVID formulation and also immuno kits for children. It was there, sir. So this is my adding information to the our principal sir's lecture, sir. And one more thing, sir, I would like to say that whatever ahara upayogin varga mentioned by Charakacharya and Vagbhatacharya, the both are used nowadays as a COVID-19 remedies, which we are practicing in our kitchen since long period. And our acharyas clearly mentioned ahara upayogin varga, that varga is now became famous for COVID-19 recipes. Thank you, Sharma sir, for giving this opportunity. And also thank you for Agnigur sir, Vishnu sir, Sharma sir, and Sarbeshwar sir. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you very much, Sudhakar Reddy ji. Thank you very much. You are supporting us. I am grateful to you as always. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for giving an opportunity for me. No, it's yours. Platform is yours. You are giving me opportunity to listen me. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So now from homeopathy, I would like to request Dr. A K Dwivedi, who is a renowned homeopathic physician from Indore, Madhya Pradesh, who has over 24 years of professional and teaching experience. Not only a homeopathic expert, Dr. Dwivedi has also the hands on in management, as he is the master of business administration and doctorate in management discipline, masters in yoga, professor in homeopathy college, homeopathic practitioners, means he has a long list of achievements. Without wasting much time, I would like to request my friend Dr. A K Dwivedi ji. Welcome. Welcome, Dr. A K Dwivedi. Thank you, Dr. Sharma ji and your team. अभी मैं पूरा आपका आयुर्वेदा सेशन देख रहा था, उसके पहले सिद्धा देखा. काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं कोविड के लिए. अगर मैं कोविड की बात करूं, कोविड के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव की, तो सभी वेव में होम्योपैथी का जो कार्य रहा है काफी बेहतर रहा है. चाहे वो आपके काढ़ा के साथ बात कर ले, चाहे वो आपके भाप के साथ बात कर ले, चाहे नेजल ड्रॉप के साथ बात कर ले, सभी के साथ होम्योपैथी ने काफी बेहतर काम किया है. इवन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट पे भी अगर मैं बात करूं तो उस पर भी काफी अच्छा काम किया है. हम लोग तब से काम कर रहे हैं जब देश में कोविड के केसेस नहीं थे, और लगातार उस पर अपनी पकड़ भी बनाए हुए हैं. मैं अगर बात करूं तो मेरे पास फीवर के न्यू बॉर्न से लेकर के 80 साल तक के केसेस आते रहे, और होम्योपैथी के सहयोग से हम उन पे जीत हासिल कर चुके हैं. मैं लगातार कोविड के टीम में इंदौर में रहा और हर तरह के केसेस पर ऑब्जर्वेशन भी बनाए रखा.
मैं लास्ट आपने जो मीटिंग एक बार ऑर्गेनाइज किया था उसमें बात किया था आर्सेनिक एल्बम के जो रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो आपको मैं प्रेजेंटेशन में इस बार लाने की कोशिश किया है कि हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया था आर्सेनिक एल्बम का, जिसमें पाया गया कि आर्सेनिक एल्बम इज सेफर देन वाटर, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम में 2 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक पाया गया, जबकि ड्रिंकिंग वाटर में 6 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक होता है। और WHO ने 10 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ आर्सेनिक किसी में भी नॉर्मल माना है, नॉट हार्मफुल टू द मैनकाइंड। और ये मेरा रिसर्च आर्टिकल इस पे पब्लिश किया गया है, वो आपके सामने अभी पीपीटी दिख रहा होगा शेयर स्क्रीन पर। आपको पीपीटी दिख रही है? हेलो? Yes, please. It is visible. विजिबल, ओके, Visible. ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोगों को काफी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके साथ जेल को भी हमने वहाँ के कैदियों को इम्यूनिटी बूस्टर और होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी आप देखेंगे ये इस तरीके का हमको सर्टिफिकेट भी वहां से जारी हुआ। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और सबसे बड़ी जो कामयाबी हमको मिली कि जिस तरीके से भारत सरकार ने कोविड के लिए गाइडलाइन बनाया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी कोविड में होम्योपैथिक दवाई को प्रयोग करने का एक गाइडलाइन बनाया, जिसमें बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम की बात की गई और लक्षण रहित कोविड के लिए आर्सेनिक एल्बम, ब्रायनिया या कैम्फोरा की बात की गई। और जो हल्के माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव है, जिसमें बुखार, गला खराब, सूखी खांसी, थकान, दर्द और कुछ लोगों में उल्टी, मचली या दर्द और पेट दर्द हो रहा है, जो अभी थर्ड जो हमारी वेव चल रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा ये इसी तरीके का सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि होम्योपैथी में केवल कोविड के लिए आर्सेनिक ही है, वो गलत है। इस तरीके का पूरा एक डिटेल्ड हमारा प्रोटोकॉल जारी हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जिनको माइल्ड कोविड है, जैसे थर्ड वेव में दिख रहा है कि बुखार भी है, गला खराब है, सूखी खांसी है, थकान है, शरीर दर्द है, नाउशिया लग रहा है या वोमिटिंग हो रही है, उसके साथ लूज मोशन या पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए वी हैव अ लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें आर्सेनिक एल्बम है, यूपेटोरियम परफोरेटम है, जलसीमियम है, ब्रायनिया है, रस्टक्स है, फास्फोरस है, फेरम फास है, आर्स आयोड है एंड कालीम्यूर है। होम्योपैथी चूंकि लक्षणों पे बेस्ड चिकित्सा प्रणाली होती है, इसलिए लक्षणों के आधार पर अगर आपको बॉडी एक हो रहा है फीवर के साथ में, तो दैट इज द यूपेटोरियम परफोरेटम। अगर बुखार के साथ में आपको डलनेस लग रहा है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस विद ट्रेम्बलिंग, तो इट इज जेल्सीमियम। अगर आपको ड्राई कफ है विथ थर्स्ट, देन इट इज ब्रायनिया। और अगर आपको मॉइस्ट कफ है विथ बॉडी एक, देन इट इज रस्टॉक्स। और फास्फोरस गले के लिए सबसे अच्छी दवाई है। इसी तरीके से फेरम फास हम दे सकते हैं, आर्स आयोड दे सकते हैं और कालीम्यूर दे सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड वेव है उसमें हम लोग काफी बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव में लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और लोग घर पर ही रह करके जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है उसको लेने के साथ साथ होम्योपैथी की जलसीमियम, ब्रायनिया, रस्टॉक्स और आर्सेनिक का प्रयोग करके काफी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छी हमको सफलता मिली हुई है। इसके लिए मैंने काफी प्रयास किया था और मुख्यमंत्री कार्यालय से आयुष मंत्रालय को ये नोटशीट जारी हुई थी, उसके आधार पर ये गाइडलाइन जारी किया गया था। हम लोगों ने काफी कोविड पॉजिटिव केसेस पर काम किया है और बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है, जिसमें जो सिटी चेंजेस थे वो भी रिजॉल्व हुए हैं। और जो चॉइस ऑफ मेडिसिन रही है वो ब्रायनिया अल्बा, कार्बोबेज, आर्सेनिक, रस्टॉक्स और जलसीमियम रही है। अभी क्यों फैल रहा है उसका कारण ये है कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ग्राफ, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि ज्यादातर लोग तो या तो जांच कराने ही नहीं जा रहे हैं, उनको माइल्ड सिम्टम्स लगते हैं तो वो घर में ही
अपना ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आ गई है, लोग जांच नहीं कराने जा रहे हैं क्योंकि घर में ही उनके पास किट अवेलेबल है, रैपिड किट, वो लोग घर में ही अपना जांच भी कर ले रहे हैं। तो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, उससे पूरे परिवार को फैल जा रहा है। और चूंकि मार्केट खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, सारी जगह खुली हुई है, तो जिनको पॉजिटिव रहता है वो भी फ्रीली घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए और डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हम लोग कोविड के केसेस में स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी काफी अच्छा काम करें। हमारे पास खुद का नेचुरोपैथी और पंचकर्मा सेंटर है, वहां पर हम लोगों को शिरोधारा करा रहे हैं। शिरोधारा का भी काफी अच्छा हमको रिजल्ट मिला है। जिन लोगों को 1 या 2 बार कोविड हो गया, उनको स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा रहा या फिर नींद आना बंद हो गई, तो उसके लिए हम लोगों ने शिरोधारा कराया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे ओन सेंटर की है, खुद के सेंटर पे है, जहां पर शिरोधारा देखने के लिए इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी भी हमारे साथ हैं, और साथ में है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी। तो हम लोग प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड तीनों तरह के स्थिति में काफी बेहतर काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग एक बहुत ही स्पेशल वर्क करने जा रहे हैं। एक किताब बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। ये किताब हम बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इसका टीजर हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। इसमें हम हर तरह के चिकित्सकीय को लोगों को शामिल कर रहे हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, एलोपैथी। इसके साथ साथ जो देसी नुस्खे हैं उसको ले रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक लोगों का ले रहे हैं, बैंक कर्मी का ले रहे हैं, और ले रहे हैं जो मरीज, जो पीड़ित वर्ग रहा है, जिसको कोरोना हुआ है और उन्होंने इस कठिन समय में कैसे खुद को संभाला है, परिवार को संभाला है और समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी ये किताब लगभग तैयारी की ओर है, जो एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा और रेफरेंस बुक के तौर पर युगों युगों तक देखा जाएगा। तो इस तरीके की किताब भी बना रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश बची होगी तो हम आप लोगों को भी स्थान देंगे। इसी के साथ डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और उनके टीम को बहुत सारा धन्यवाद। आपने हमको समय दिया और सभी लोगों ने धैर्यता पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी होम्योपैथी का गागर में सागर समाने की चेष्टा की। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डॉक्टर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू। मैं अपनी अब नेक्स्ट जनरेशन के योगी अमृत राज, मेरे बहुत ही पारिवारिक मित्र श्री राकेश जी अग्रवाल, आरोग्यधाम के संस्थापक, और अमृत राज जी उनके सुयोग्य सुपुत्र, जो योगी अमृत राज ऋषिकेश में अपना एक खुद का आश्रम है, पंचकर्म सेंटर है, योगा सेंटर है। मैं ऐसे युवा योगी अमृत राज को आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, आग्रह करता हूं कि वो कुछ हमें बताएं कोरोना की थर्ड वेव के बाद। योगी अमृत राज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी, सभी गुरुजनों को मेरा दिल से और आत्मा से प्रणाम, और रिस्पेक्टेड डॉक्टर पवन शर्मा सर और रिस्पेक्टेड सभी वैद्यस को, डॉक्टर्स को मेरा दिल से और आत्मा से प्रणाम सर। सर सबसे पहले तो मैं आप सभी को ब्यूटीफुल डे, लवली डे, ग्रेट डे, हैप्पी डे और मैजिकल डे बोलना चाहूंगा। और जैसे कि अभी कुछ हमने लेक्चर सुने जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस हमने बताए जड़ी बूटियों के बारे में, तो उससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन भी मिली। लेकिन मैं साथ ही साथ आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहूंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी दिनचर्या पे मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा, और हमारा आहार और विहार।
तो आयुर्वेद में यानी साइंस ऑफ लाइफ में योग यानी कि अथ योगानु शासनम योग कर्म कौशलम में सबसे इंपॉर्टेंट ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। तो उन्होंने प्राण शक्ति को बढ़ाने का संदेश दिया है, जो कि यहाँ पर हमारे बहुत काम आता है इस थर्ड वेव में, कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, बारिश में बारिश नहीं लगेगी। तो इम्यूनिटी को हमारे यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा गया है, प्राण शक्ति कहा गया। तो इम्यूनिटी बढ़ती है जब हम अपनी प्रकृति के अनुसार आहार और विहार करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है जब हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, मौसम की सब्जियां, मौसम के फल। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम कि खुश रहने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्माइल करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, 500 स्माइल्स अ डे। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि रात को जब हम सोएं तो खुश होकर सोएं, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कर या गायत्री मंत्र कर, और जब सुबह उठे हम तो खुश होकर उठें और खुश होकर दिन की शुरुआत करें। जो हमारा थॉट प्रोसेस है, आप आश्चर्य करेंगे, इससे हम मन के हारे हार हैं, मन से ही जीते जीते हैं, मन से ही गीत है, मन से ही गजल है, मन से ही मंदिर है, मन से ही मस्जिद है। तो मन का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो मन से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी एपेटाइट पे, मन से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे हैप्पी हार्मोन्स पर, मन से बहुत प्रभाव पड़ता है पूरी बॉडी पर, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। तो मैं बस यहाँ ये कहना चाहूंगा कि थॉट्स, आजकल फियर बहुत ज्यादा है इस वायरस की वजह से, हमें फियर को सबसाइड करना है एफर्मेशन से कि वी आर डिवाइन सोल्स। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्यार हूं, मैं खुशी हूं, मैं शांति हूं। तो इन सब चीजों का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में आधा घंटा 20 मिनट ध्यान लगाएंगे, इससे भी हमारी प्राण शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कि रेस्पेक्टेड सर ने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं अपने पापा का, मम्मी का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल। आरोग्यधाम परिवार से मैं हूँ, मुजफ्फरनगर से, ऋषिकेश से। और ऋषिकेश में हमारा आश्रम है, माँ योग आश्रम के नाम से। और आरोग्यधाम परिवार में जड़ी बूटियों पे तो हम काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अवेयरनेस कैंप्स भी कर रहे हैं योग आयुर्वेद के, बच्चों में, बड़ों में, या ऑनलाइन के माध्यम से। और जड़ी बूटी पे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो अलसी हो, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो सहजन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं कि आप अपना जो है मन का भी शैम्पू करें। हम अपने बालों का शैम्पू करते हैं, मन का शैम्पू नहीं करते। तो मन के शैम्पू से तात्पर्य खुश रहें। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। तो यहाँ ये कहने से तात्पर्य है कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो हम फॉरगिव कर दें, और हमने किसी को हर्ट किया है तो सॉरी बोल दें। तो दोनों सिचुएशंस में हमारा मन शांत रहेगा और खुश रहेगा। तो रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, मैं आप सभी को ऋषिकेश आने का इनविटेशन भी देता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि सब लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और आनंद में रहें, और ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स हो आपकी, ब्यूटीफुल आफ्टरनून्स हो, और ब्यूटीफुल इवनिंग्स हो, और सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें, और सब लोग आनंद में रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, और आरोग्यधाम परिवार की तरफ से, अपने माताजी, पिताजी, मेरा ब्रदर डॉक्टर अर्जुन, सबकी तरफ से, और धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आप सभी बड़ों में, गुरुजनों में मुझे मौका मिला बोलने का। तो योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो। तो अगेन, चाहे हम 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन सही प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करें, चाहे कपालभाति करें, और ध्यान लगाएं और खुश रहें। इससे भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और मन शांत रहेगा, और हमें जो है, हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। नमस्कार। अगेन आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ए के द्विवेदी जी, डॉक्टर ए के द्विवेदी जी। आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, जिसमें सिद्ध से लेकर और योगा तक आयुष की सभी ब्रांचेस का हम लोगों को सीखने को मिला। एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मैं अब रिस्पेक्टेड बीके अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बीके अग्निहोत्री जी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, और यदि कुछ कोई ओपन सेशन है, यदि कोई भी कुछ बोलना चाहता हो कोरोना की थर्ड वेव के बारे में, डॉक्टर श्रीराम जी भी हमारे साथ हैं,
यदि कुछ भी हमें सूचना देना चाहते हो तो वो समाज के लिए अच्छा होगा। यह कार्यक्रम YouTube पर लाइव है और वहाँ रिकॉर्डेड भी रहेगा, हम शेयर भी कर सकते हैं। एनी एक्सपर्ट फ्रॉम ऑडियंस। इतनी अच्छी तरह समझाया गया सभी स्पीकर्स के द्वारा, आई डोंट होप एनी क्वेश्चन इज देयर। मैं सभी को कृतज्ञ हूं और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आदरणीय प्रोफेसर VK अग्निहोत्री जी, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ व्रत, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी, थैंक यू। और हमारे सभी आज के डिग्निटरीज, हमारे बड़े भाई डॉक्टर विष्णु शर्मा जी और मित्र रेड्डी जी, नमस्कार। रेड्डी जी और हमारे आपके GSS कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कर साहब और अपने राजगोपाल JK साहब, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन और आज के बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। ये हमारे डॉक्टर पवन शर्मा जी हैं, जो मतलब देखा जाए यही वास्तव में बहुत सारे गुणों की खान है। ये इनका एक जादुई चमत्कार है कि इतने इतने लर्नेड लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, जोड़ देते हैं और अपन सब लोग इतना गहरे से लाभान्वित होते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनकी एक कार्यशैली है और हम तो ये ताज्जुब मान रहे थे, बेशक सभी लोग अभी इंडिया में ही हैं, अगर ये सब लोग एक साथ कहीं इकट्ठे हो जाएं तो ज्ञान का कितना बड़ा संग्रह हो जाएगा। सभी लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से अपना कोरोना के तीसरी वेव के सापेक्ष अपनी बातें रखी। हम अपने राजगोपाल जी JK सर के बारे में बात करेंगे। रियली नो डाउट हम लोग इनकी प्रिपरेशन सिद्धा की जितनी हरिद्वार में उपलब्ध हो पाती थी 1990 से लेके और अभी तक इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि पवन शर्मा जी ने भी कहा था कि जहाँ तक सोरेसिस का और विटिलिगो का सवाल है, कोई डाउट ही नहीं है, मतलब कोई उनका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। लोग इसके बाद तो इतने एक्सपर्ट हो गए, फोन से ही पूछ लेते हैं, हाँ वो हमें फायदा हुआ था, हम कंटिन्यू कर लें, हम उसको लोकल एप्लीकेशन लगा लें। ये रियली इनका एक है। और थोड़ा नॉर्थ इंडिया में प्रिपरेशन मिल नहीं पाती, मुश्किल होती है, बट स्टिल इनकी जो स्टडी है उसके तहत केवल वही क्षेत्र नहीं, समस्त क्षेत्रों में, विशेष रूप से जब विश्व स्तर पर कोरोना की दिक्कतें आई उसमें भी इनका योगदान रहा, जिसमें उन्होंने अपने बहुत विशेष रूप से चर्चाएं की कि प्रिवेंशन के मामले में ही हम बहुत अच्छे से अपने इस युद्ध को जीत सकेंगे। और हमारे नंबर 2 पर आज हमारे द्वितीय वक्ता रहे हमारे प्रिंसिपल साहब, रिटायर्ड आसाम से विश्व जी, हमारे गार्जियन भी हैं। तो उन्होंने, हम देखते हैं कि पहली, द्वितीय और वर्तमान इन सभी परेशानियों को देखते हुए क्या कुछ जनता को सहन करना पड़ा, कितने पेशेंट की प्रैक्टिस में आए और कौन कौन से नए सिम्टम्स लेके आए, तो सबका पूरा संकलन इन्होंने आज के अपने एड्रेस में दिया, उद्बोधन में दिया। क्योंकि जैसा हम लोग मानते हैं, ये कहावत है, एवरी सिंगल डे इज गिविंग ए न्यू एक्सपीरियंस, एवरी सिंगल डे। और उस एवरी सिंगल डे के एक्सपीरियंस को अपनी एकेडमी से जोड़ के, रिसर्च अपनी जगह पर, आप कोई पूछे कि चाय हम क्यों पीते हैं, खाना हम क्यों खाते हैं, इसका एविडेंस प्रूफ दें, ये तो फिर बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। भूख लगती, खाना खाते हैं, भूख शांत हो जाती है, खाना शरीर को ताकत देता है और हम लोगों का शरीर चल रहा है। तो हर छोटी छोटी चीज का तिलक क्यों लगाते हैं, कुछ करते हैं, ये हर चीज के एविडेंस देते रहेंगे जब तो मरीज हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अगर हमने जिंजर को समझा है, लहसुन को समझा है, गिलोय को समझा है, तुलसी को समझा है, तो आज मौका है हम इसका उपयोग करें, और किया, उसको पॉजिटिव लाभ मिले। और अति सर्वत्र वर्जित, अति करेंगे तो फिर तो पिंपल्स हो गए और दूसरी एसिडिटी हो गई, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आज उन्होंने एक और बढ़िया चीज बताई कि इवन फ्लोर क्लियरेंस के लिए और डिसइंफेक्टिव लाभ लेने के लिए उसके अगर हमको डिकॉक्शंस मिल जाए, यहाँ पर अच्छी खेती हो रही हो, या एलवा भी है या ये है, उसको हम फ्लोर क्लीन भी करके, या स्वर्ण गैरिक का भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें थी पहले, जो गोबर और हमारा जो हमारा ये जो गोमूत्र है, इस सबको भी इसी रूप में इस्तेमाल किया गया और करना भी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हमारे केमिकल बेस्ड नहीं मिले तो लाइजोल वगैरह दूसरा, तो इसका हम लाभ ले सकते थे। इस विषय पर उन्होंने काफी चर्चा की। बाकी तो सब कोई पुनरुक्ति वाली बात हो जाएगी कि वो गोल्डन मिल्क है या च्यवनप्राश है, नस है, अणु तेल है, वो सारी चीजें रिपीटेडली हुई। इन सब के बाद में हमारे जो
तीसरे वक्ता हुए कार साहब जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने रियली जो उन्होंने अपने जीवन खर्च किया है रिसर्च में और विभिन्न संस्थानों में रहते हुए जो चीजें दी, वो एकदम इम्पैक्ट में। मैं देख रहा हूँ वो कार में चल रहे हैं, अभी भी कार में अभी यात्रा कर रहे हैं, और उसी से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि यही उनका पैशन था कि जो उनकी जानकारी है वो जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म तक आ पाए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने रखी कि एकदम से हम रैंडमली तुलसी और गिलोय और लहसुन को इस रूप से न लें, टर्मरिक विशेष रूप से, इसमें जो वर्क हो रहा है, कुकुरमा के ऊपर वर्क हो रहा है, अब ये भी मानते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, अब ये भी हम मानते हैं कि उसमें बाइसोलोन भी होता है, माने स्टेरॉइड भी होते हैं। तो इन सबको रेशनली हम कितना इस्तेमाल करें, किस क्रम में इस्तेमाल करें, एज ए मसाला का वो इस्तेमाल करना है, कोविड के क्रम में इस्तेमाल कैसे करना है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए कितना इस्तेमाल करना है, ये इनका पॉइंट बहुत ही वैलिड था। इस चीज जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज अच्छी है, उसमें गुणवत्ता है, तो उसको हम उसका दुरुपयोग न कर ले। ये बहुत ही समय से बताया, और इस चीज को ही उन्होंने जो बताई कि इस कोरोना काल में उन्होंने अपने कॉलेज से जो किट तैयार की, जिसको कि सप्लीमेंट किया हमारे रेड्डी साहब ने, सुधाकर रेड्डी जी ने भी कहा कि हम प्रिवेंटिवली जो बच्चों के लिए, जहाँ पर एक तरफ सोनप्राशन की बात रखी, वाला सैन की बात रखी, और बाल जातिबुत सिरप के रूप में दूध पापेश्वर का इन्होंने वर्णन किया, तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई बताया ना, एवरी सिंगल डे हर व्यक्ति को, एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को, क्लिनिशियंस को, इन सबको मौका मिला कि वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें, और उसी क्रम में आज हम श्रेष्ठ हुए। बल्कि मैं समझता हूँ भले ही ये अभिशाप है, कोरोना कोविड-19 अभिशाप जरूर है, लेकिन शायद इसने आयुर्वेद के सारे संभावित नुस्खों और काष्ठ औषधियों पर वर्क करने के लिए प्रेरित किया है। और समस्त हमारी आयुर्वेदिक संस्थाएं, और इवन अब तो सरकार भी, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हुई हो, उत्तराखंड सरकार रही, दिल्ली, पूरे भारत में आयुष मंत्रालय ने स्वयं इस चीज को लीड करके लिए, हमारे अच्छे एडवाइजर्स वहां बैठे हैं जिन्होंने काम किया। तो ये अच्छा रहा कि इसकी पकड़ मिली, और उसने हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में और ब्रह्म प्रकाश में कितनी जिंदगी बताई गई। और नंबर 4 पर हमारे जो द्विवेदी जी थे होम्योपैथी वाले, आज हम मिस कर रहे थे अपने उनको, दूसरे हमारे कौन, त्रिपाठी जी को, वो भी होम्योपैथी से अच्छी डिस्कशन देते हैं। और इन्होंने जो आर्सेनिक की बात रखी, बिल्कुल सही बात है, ये उस दिन भी था, बल्कि वो जेल के बता रहे थे, जेल में उन्होंने सबको दिलवाई थी आर्सेनिक, और किसी को नुकसान नहीं हुआ और सभी को फायदा ही हुआ। और इस चीज को भी बहुत हाईलाइट किया। हमारा तो आयुष डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ भी आयुष को उन्होंने सप्लीमेंट किया था, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया है। तो ये उनका बड़ा अच्छा रहा। और 5वां जो आज हमें सरप्राइज मिला है, जबरदस्त सरप्राइज, ये हमारी पवन कुमार शर्मा जी ही कर सकते हैं। हमारे जो योगी अमृत राज के आपने जो आज एक क्षणिका दिखा दी, आपको हम अमृत अगर कहीं हो तो भैया सुन लीजिए हमको। 2004, 5 और 6 में प्रगति मैदान में दिल्ली में जो आयुष मेला, आरोग्य मेला लगता था, तो वहां हम उत्तरांचल को रिप्रेजेंट करते थे। और हमारे स्टॉल पर, उत्तरांचल स्टॉल पर, आपके पिताजी श्री राकेश अग्रवाल जी आया करते थे, आ गए थे, चर्चा हुई, मेरा बेटा पढ़ रहा है। आप कहाँ डीएवी में पढ़ लेते या कहाँ कुरुक्षेत्र पढ़ लेते? सर डीएवी में पढ़ रहे थे, दयानंद पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोहन पवार साहब भी बगल में ही उनके डीएवी का हमारा स्टॉल लगा हुआ था। हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ आपके पिताजी आए घूमते हुए, मेरे ख्याल मम्मी भी थी, नीलम जी थी, दो लोग आए। हमारे बहुत पूर्व परिचित हैं मुजफ्फरनगर से, और निरोगधाम पत्रिका वाला देते थे, तो उस समय आप पढ़ रहे थे, तो बड़ा खुशी हुई कि आप यहाँ पर आ गए। और हरिद्वार और ऋषिकेश तो सिर्फ 26 किलोमीटर की दूरी है, कभी भी इधर आना, बेटों की तरह बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज सर? हाँ, मैं ऋषिकुल से रिटायर हो गया हूँ 16 में, और DIMS जो देहरादून का था, सहसपुर वाला, उससे भी अभी 21 रिटायर हो गया हूँ। मेरी एकदम आपसे मिलने की इच्छा हो गई, देख के बच्चा हमारा इतना बड़ा हो गया, और बता रहा अपना इंडिपेंडेंस। आशीर्वाद लेने आऊंगा सर। मैं आपकी वाणी से ही लग गया कि आप आशीर्वाद लेने के ही लिए आज जुड़े हैं। आज आपने सिर्फ अपने गुरुजनों को उपस्थित पाया, हमें बड़ी खुशी हुई। ये पवन कुमार शर्मा जी का चमत्कार है। मैं शकल से आपको नहीं देखा था, पिता ही कहते थे बच्चा पढ़ रहा है, आप बताओ। मैंने कहा भैया मैं इनसे कह दे रहा हूँ। अपने मोहन कुमार जी शायद सब थे, तब अनूप बखर जी वहां हुआ करते, सारे सब लोग थे अपने डीएवी में, और मैं जाता था एग्जाम मिलने का, तो बड़ी खुशी हुई। कुल मिला के आज क्लोजिंग रिमार्क यही है कि भाई पवन शर्मा जी की इस कर्मठता की भूरी प्रशंसा है, और आज के सब ज्ञानियों को हमारा हाथ जोड़ के अभिवादन है। और यही ज्ञान अपना हम सबको शेयर करते रहे, और हमारी वेबिनार ऐसे ही अगले से अगले पैदानों चलती रहे। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
कल आदरणीय चंद्रभूषण झा जी से फाइनल करने की आशा करता हूं। सर कैसी वेबिनार लगी वो अपने आदरणीय चंद्रभूषण झा जी। हाँ पवन जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा और आयुष के हर एक कॉर्नर से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या कितना किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सामने आई। बड़ा अच्छा लगा और नए नए चेहरे अमृत राज जी को बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ आज। किसी हमें लगता है दशक में 20 साल हुए होंगे या 25 साल हुए होंगे, तो मुजफ्फरनगर में इनसे भेंट हुई थी। इनके पिताजी से भी मुलाकात हुई, इनकी फार्मेसी को भी हम लोगों ने विजिट किया था, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा। और आपको विशेष रूप से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आप रोज नया नया एक ज्ञानवर्धन का मौका, अवसर लोगों को प्रदान कर रहे हैं। हम भी इसमें लाभ ले रहे हैं, तो चलते रहें, बढ़ते रहें आगे, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ज्ञापन में करता हूँ। धन्यवाद। मुझे प्रणाम, क्षमा करें, मैं भूल गया था आपका नाम उसमें फ्लो में। नहीं कोई बात नहीं, अरे भूलना क्या होता है। वो दरअसल वो लिखत पढ़त इतनी ज्यादा होती है कि तुरंत लगता है कि पूरा ठीक है। तो आपका तो आशीर्वाद हमेशा रहते ही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे से रहता हूँ नेपथ्य में। अभी बनारस BHU होके आए हम, अभी MD एग्जाम लेके संस्कृत में। अच्छा, मैं इस समय दिल्ली रह रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में? अच्छा हाँ, तो दिल्ली भी रहता हूँ, बनारस भी रहता हूँ। और हो सकता है KN द्विवेदी ये नए वो हो गए हैं ना अपने डीन। बिल्कुल उनसे भेंट करके उनको मिलके आए, उनसे भी बिल्कुल 3-4 तारीख में। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्कार शर्मा। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। कल पुनः मिलने की आशा करते हुए आज के लिए विदा। थैंक यू राजगोपाल जी, थैंक यू सो मच। आपके प्रोडक्ट वाकई में इतने अच्छे हैं कि हम सब लोग स्किन डिसऑर्डर के लिए एक ही नाम याद आता है, JRK सिद्धा। थैंक यू। Thank you so much. We are very honored. We'll continue to do our research. नमस्कार नमस्कार।